Hello students, how are you? I welcome you all in today's SST class. We will proceed further in the next topic. Please don't forget to subscribe, like and share. Today the topic is about religion. We will see and learn about the religion. The religion of the inhabitants of Andaman and Nicobar Islands is called Jainism. The tribals believe that in earlier times their deity Peluga resided at the highest mountain peak of the Andaman and Nicobar Islands, the Saddle Peak, but now the deity lives higher up in the sky. The followers of Jainism believe in souls, ghosts and spirits. Here what is written here? The religion of the inhabitants of Nicobar Islands, यानी क्या कहा जाता है? Jainism. ट्राइबल मानते थे कि पुराने समय में जो डेटी है जिसका नाम है पेलुगा, कहाँ रहते थे? At the highest mountain peak of Andaman Nicobar Islands. That is what is the peak? Saddle Peak. But now the deity lives higher up in the sky. लेकिन अब वो ज़्यादा ऊंचा आकाश में रहते हैं और इससे फॉलोअर्स जो अपनाने वाले हैं, जो मानने वाले हैं निज़्म को, वो सोल, गॉस्ट और स्पिरिट में विश्वास रखते हैं. This is the picture of Jainism, the followers who follow Jainism. Now next part is dance and music. We will see about dance and music. The Islanders celebrate most Indian festivals like Durga Puja, Pongal, Penguin, Uthiram, Onam, Mahashivratri, Janmashtami, Holi, Diwali, Christmas and Good Friday with dance and music. Nicobaric dance is the traditional dance of Andaman and Nicobar. It can be seen during the Ozari feast, the commonly known as Peak Festival. और यहाँ का आइसलैंडर है जो रहने वाले हैं, बहुत सारे फेस्टिवल जो नाम दिए गए हैं मनाते हैं डांस और म्यूजिक के साथ. और यहाँ का ट्रेडिशनल डांस क्या है? निकोबारी डांस. और ये देखा जा सकता है किस समय? पिक फेस्टिवल के समय. Here you can see the Nicobari dance. It's unique in itself. Now we'll read about languages. The most common languages in Andaman Nicobar Islands are Hindi and English today. कौन से हैं? लैंग्वेज कॉमन है हिंदी और इंग्लिश. People also speak Bengali, Tamil, Telugu, Malayalam, Punjabi, Marathi, Kannada, Oriya, Gujarati and Karen. The Karen language has a Burmese script and alphabets. और Karen language में कौन सा है स्क्रिप्ट? किससे लिखा जाता है? बर्मी स्क्रिप्ट और अल्फ़ाबेट्स भी इसी का है. सो कॉमन लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश है और सभी भाषाएं बोली जाती हैं. Do you know the harmonious blend of different religions, languages and ethnic groups has made the Andaman Nicobar Islands famous as mini India. अंडमान निकोबार आइलैंड्स किस रूप में फेमस है? एज मिनी इंडिया. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक. थैंक यू.